Okay, Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of applied probability. So, today we will discuss the hidden Markov model, which is in a way an extension of the Markov chain that we discussed in the last lecture. And we will actually start with the Markov chain since we were discussing the page rank algorithm in the last class and we were not able to completely finish it. So we'll start from there and then we'll move on to the hidden Markov model, first motivating with an example, and then going through the theory of hidden Markov model and the Viterbi algorithm in particular. So that's basically the agenda for today. So are there any questions? So we were discussing the Markov chain, which is also known as a discrete state Markov process. Basically, it uh, involves a random variable in which we have that has a uh, discrete distribution. Okay, so categorical distribution or a Bernoulli distribution. And we also motivated the Markov chain example by using a language model, and in particular, the bigram language model was a Markov chain. So let me first refresh you with the notation and the basic concept of a Markov chain, and then we'll go back to the page rank algorithm and complete it. So a Markov chain is completely defined by a uh, transition matrix A. So A is a transition matrix. So usually this is n by n transition matrix. And this transition matrix basically contains the probabilities for moving from one state to another state. So a particular element in this matrix, Aij, or sometimes also written as the small aij, as we'll see later on. So this is basically the probability of uh, going to state j from state I. Okay? So this one element in this matrix represents this conditional probability of going to state j from state I, where all of these states Si come from a set of possible states. Okay? So capital S is a set of all possible states, and there are n possible states. So that's why this matrix is n by n. Okay? And this matrix A must be a proper stochastic matrix, which means that A, the sum of over all J, meaning one row of this matrix A, should sum to 1. Okay? Or if you take the example of the web surfer or the web graph, this basically means that you must have basically all the outlinks from a particular page I must have a probability that sums to 1. Okay? So there must be a way of going out of a page I, either back to itself or to all the other pages. In any case, all those links and their probabilities of taking those links should sum to 1. Okay? So this requirement makes this matrix a stochastic matrix. So this is a requirement for a Markov chain. So in the case of a bigram language model, this was basically the probability of transitioning from one word to another word. Okay. So the next state only depends on the present state. So the context window is just one. So that is the Markovian assumption. The context state is just
1. So in addition to this, we also have a distribution over all the possible states. ठीक है? So let's say P, small p. So this is, let's say, the probability of being in state Si. So small pi, sometimes this is in notation, you call this as pi I as well. So P or pi I. So this is the probability that you will see state Si. So in the case of a web graph, this is the possibility that a surfer, a web surfer, a web browser will be on page Si. So Si is a page in the case of web pages, and Si would be a word in the case of a language model. So this is the probability that you will see this page or this word or page uh, in, and this in general, and of course you can represent all of these probabilities in a vector. So P vector of size n. So this will contain all those probabilities. And these probabilities, they can be initial probability, which we can say the index, iteration index 0. Okay? So this is the initial probability distribution. Okay? So this is the probability that at the start of the Markov chain, you will find this particular state. And of course, this is a distribution. And as it said, this is a distribution, this also should sum to 1. So it is possible that you may start your state from one particular state, meaning that P for a particular SI is 1, while for all the other SIs, it is 0. That's also possible. But in general, this can be a distribution. So the likelihood of finding a browser on web page A and B and C can be given by a distribution of 0.5, 0.4, and 0.1. All of this should sum to 1. ठीक है? So, and then there is a concept called the stationary probability. So, so remember, Markov chain is a time process. It's a process over time. The index is over time. So you see a state at a particular time, then you see a next state, then you see a next state. So if you run this state over a long period of time, then this probability P in some scenarios should stabilize. Okay? This probability should stabilize, or there should be no change in this probability P. So this is called the final steady state probability distribution or the stationary probability distribution. But for this to happen, the matrix A should satisfy some additional criteria. So the first criteria was A should be a stochastic matrix, which we defined earlier. So this additional criteria is that A should be irreducible. We wouldn't be able to discuss these in much detail. And the second criteria is that A should be aperiodic. So ये दो additional conditions भी होने चाहिए, and then the Markov chain would have a stationary probability irrespective of the initial probability distribution. ठीक है? So whatever the initial probability distribution, and these conditions are satisfied, if the chain runs for a long period of time, you will attain a steady state probability distribution. Okay? So in the context of web surfer and page rank, so it means that if the web surfer traverses the web graph and you let the web surfer move over the web graph randomly according to the links on the web graph over a long period of time, then
you will achieve this steady state probability, which basically means that in the steady state, after a long period of time, the distribution of the web surfer on a particular web page would be given by this P, this stationary probability distribution. And that stationary probability distribution is called the page rank because it indicates the importance of a particular page in the graph or in the web. तो जिस पेज की probability ज़्यादा है, stationary probability ज़्यादा, it means that that page is much more visited as compared to another page, or its probability of being visited is higher than that of another page. ठीक है, so this was the idea of page rank. अब ऊपर मैंने conditions दो बताई हैं, irreducible and aperiodic. And of course, these two conditions can also be viewed in the context of the graph. Remember, any transition matrix A can be represented as a graph. We talked about it last time. So ये एक example web graph है. So in this particular case, so this is a web graph for a number 6 web pages, and we discussed this last time. So the page 5 does not have an outlink. So in this case, this would not be a proper stochastic matrix. We will have to add outlinks from page 5 to all other pages with uniform probability, let's say 1/6, and then this would become a this would become a stochastic matrix. But we need to satisfy two additional conditions, which is irreducible and aperiodic. Irreducible basically means, in the context of a graph, that the graph is strongly connected, meaning that you have a path from every node to every other node. ठीक है? So you have a path from every node to every other node. So in this graph, that condition is not actually satisfied. ठीक है? So for example, 5 does not have any outlinks. So 5 से आप किसी और पेज पे नहीं जा सकते. ठीक है? And even if you add outlinks from 5 to every other page, so there is other condition. For example, 3 to 4 पे आप नहीं आ सकते. So 1 to 4 नहीं जा सकते. So strongly connected की condition भी satisfy नहीं हो रही. So aperiodicity क्या कहती है? Aperiodicity ये कहती है कि there should be a path from every node to itself, back to itself, of all lengths. Not just of 1 or 2 lengths, but all lengths. 1 length का भी path होना चाहिए, मतलब self loop भी होना चाहिए, 2 path length का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए, and so on. So that means aperiodic, and the first one strongly connected, meaning there should be a path from one to the other. So ये दोनों conditions in general a web graph में satisfy नहीं होती, but we approximate them by adding some additional links. ठीक है? So in general, by the way, this stationary probability is computed by the power iteration method. So this P is a vector, and then you have A transpose P. ठीक है? So you do this iteratively for various iterations. ठीक है? T minus 1. ठीक है? So T and T minus 1 are iteration operators or iteration indicators. Yeah, so you apply this multiple times until P stabilizes. So this would be the stationary probability. But for this, as I said, A should be stochastic, it should be irreducible, it should be aperiodic. Stochastic हमने ऊपर कर दिया.
But irreducible और aperiodic in the context of page rank किस तरह करते हैं हम? We assume that we, so basically आपके पास जो ओरिजिनल अभी जो मैंने a लिखा है उसको मैं a ही समझ रहा हूँ. We dampen a by a constant t. So d is a damping factor. It's scalar. ठीक है. So usually its value is so let's say it's around 0.85. So we, so ओरिजिनल आपका ग्राफ है उसमें जो लिंक्स हैं उसको थोड़ा सा आपने कम कर दिया है, और जो बाकी बचा है वो आप सारे लिंक्स ऐड कर दें. सो मेक इट स्ट्रांगली कनेक्टेड. जब सारे लिंक्स ऐड कर लिए स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए, और ए पीरियोडिक भी हो जाएगा बिकॉज नाउ यू हैव ए लिंक फ्रॉम एवरी node to itself as well as from the other nodes with periods 1, 2, 3 and 4. Because हर नोड से every other node का लिंक आ रहा है. So we change A in this way. तो आपका जो नया A अब जो बनेगा वो 1 minus D E divided by N plus D into A. So this is your new A, which is now aperiodic, irreducible and stochastic. सो डी जो ओरिजिनल हमारा ए मैट्रिक्स था उसको थोड़ा सा डैम्प कर दिया, जो एक्चुअल बिहेवियर था उसको थोड़ा सा डैम्प किया हमने 0.85 0.9, और जो बकाया रह गया वो हमने सारे लिंक्स ऐड कर दिए. सो जो ई है, दिस इज एन बाय एन matrix of all ones, and of course you know what n is. N is the number of nodes. So this matrix E over n would then would have values of 1 over n. In the case of the graph that I showed, this, all of these values will be 1 over 6. So 1 over 6 को 0.15 से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल d into a में ऐड कर दिया. And now you apply the power iteration and it will converge. So now the final page rank का जो फॉर्मूला है वो ये है. t, ठीक है, 1 minus d e divided by n plus d a. This is the transpose, and then p caret t minus 1. So this is the formula that you apply repeatedly until P converges, and the converged P is then called the page rank. And this is the stationary probability of the Markov chain. ठीक है? So when we were discussing the bigram language model, we were not concerned with the stationary probability. तो वहाँ हमने ये power iteration नहीं किया because for that particular application, the stationary probability is not very useful, or is not very, it doesn't have a significant practical application. But in the page rank algorithm, where we want to find the importance of each page, the stationary probability has a practical value. इसलिए हम यहाँ निकाल रहे हैं. ठीक है. बट जो बायोग्राम मॉडल लैंग्वेज मॉडल था वो भी मार्कअप चेन ही था. ये भी मार्कअप चेन है, बट यहाँ हमने एक स्टेप आगे गए हैं, हमने स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी भी निकाली है. ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस? The stationary probability, if you go back to the graph, so if you, the page rank basically is the importance, is a value that signifies the importance of each web in a web graph. If each page in a web graph, and that importance is basically determined by how other pages link to it. ठीक है. So if you recall, you mentioned that you can think of uh, the Markov chain in the context of web graph as a random surfer.
सो इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पी बताई थी, P0, so that is the probability that a surfer would be at any particular web page. ठीक है, so it could be on 1, 2, 5, 6, whatever. अब let's say for example it is on 1, so 1 के पास उसके पास options हैं, it can go to 2 and it can go to 3. Of course ये graph change हो जाएगा after applying those modifications. It has options to go to any other page, but उनकी probability different होंगी. So let's say it goes to 2, ठीक है, and from 2 it has other options, it goes to 3 and so on. So ये जो state of changes हो रही हैं, if this goes on for a very long time, and now you have a distribution over when how likely you see a web surfer on a given page, so that is actually the stationary or steady state probability distribution. और उसमें इट्स वेरी इंट्यूटिव कि जिस पेज पे ज़्यादा इन लिंक्स हैं और वो इन लिंक्स और अच्छे इन लिंक्स वाले पेजेस से आ रहे हैं, तो इसका मतलब वेब सर्फर उस पे प्रोबेबिलिटी उस पे ज़्यादा होगी. So this algorithm would give that a higher stationary probability. And that, as I said, is the page rank. ठीक है? So web सर surfer. मेरा एक छोटी सी कंफ्यूजन थी। जी वो जो आपने बताया था कि जो ए मैट्रिक्स है उसको उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि वो मतलब कंप्लीटली कनेक्टेड स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाए, जी जी. तो उस केस में ये जो ओरिजिनली जो जीरोस हैं फॉर एग्जांपल उनकी जगह पे भी वैल्यूज नहीं आ जाएंगी, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कि प्रोबेबिलिटी को जो आप एंड पे निकाल रहे हैं पेज रैंक। तो वो जो हमने मॉडिफिकेशन सी हैं उससे ओरिजिनल वेब ग्राफ आपका चेंज हो रहा है, बट इफ़ यू नोटिस द नंबर्स, वो नंबर्स हमने थोड़े थोड़े दिए हैं, तो सो दैट थोरेटिकली हम उसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, बट हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर है वो वही रहे. सो फॉर एग्जांपल हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था वो मेजर स्ट्रक्चर था, उसको हमने 0.85 या 0.9 उसी को रिटेन रखा. सिर्फ 10% हमने एडिशनल लिंक्स डाले टू सेटिस्फाई द थ्योरेटिकल कंडीशन. तो जो सही है, डोमिनेंट लेकिन बिहेवियर है वो हाँ, फिर भी हमारा रह रहा है उसके अंदर. ठीक है, लेकिन कोई अगर ऐसा केस हो, आई थिंक ये रियलिस्टिक शायद नहीं है, लेकिन अगर वेब पेजेस के सही देख रहे हैं तो अगर बहुत सारे पेजेस हों तो इफ देयर इज वन पेज दैट लिंक्स टू मेनी मेनी पेजेस, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रोबेबिलिटीज हैं आउटगोइंग वो छोटी होंगी, तो वो आप मतलब आई गेस फर्क तो आएगा, लेकिन फिर भी मतलब हाँ अगर मतलब आप यू आर चेंजिंग इट स्लाइटली, बट जो चेंज हम कर रहे हैं वो काइंड ऑफ आप कह लेना कि हम लिंक्स फ्रॉम एवरी पेज टू एवरी अदर पेज कर रहे हैं. जो भी इम्पैक्ट आएगा हर पेज पे वो स्टैंडर्ड इम्पैक्ट आएगा. जो नेचुरल बिहेवियर जो हमारे D × A से आ रहा है वो हर ग्राफ का डिफरेंट होगा. और जो हम कह लें कि नॉइज ऐड कर रहे हैं, आप उसको ये भी कह सकते हैं वाइट नॉइज है, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म नॉइज है, एक जैसी चीज हम हर जगह ऐड कर रहे हैं, तो वो इसका एक कांस्टेंट अफेक्ट आएगा हर पेज के ऊपर. सो सो इफ यू कंपेयर वन पेज का पेज रैंक विद अदर पेज का पेज रैंक, तो वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा. हाँ सही है, सो मेक सेंस। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमारा डोमिनेंट बिहेवियर वो हम रख रहे हैं, जो हम नॉइज ऐड कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म टाइप की चीज ऐड कर रहे हैं, हर पेज से एवरी अदर पेज का एक लिंक ऐड कर रहे हैं. ठीक है. सही है, समझ आ गया, थैंक यू सर। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? तो अब ये है कि वेब या पेज रैंक में या वेब ग्राफ में स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक तो खैर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको करनी पड़ेगी. इरिड्यूसिबल और एपीरियोडिक कंडीशन नेचुरली जनरली सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम पेज रैंक एल्गोरिथम चेंज करते हैं. बट फॉर अदर एप्लीकेशन ये नेचुरली कई दफ़ा सेटिस्फाई हो रही होती हैं, सो यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस. ठीक है. But you need to check, especially if you want to find stationary probability. Stationary probability, if that is not relevant in your application, let's say जैसे हमने language modeling की बात की थी, we are only interested in finding the probability of a sequence as well as probability of the next word given the previous words. Stationary probability वहाँ interested नहीं थे हम, तो वहाँ हमको वो वाली conditions
चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। Markov chains की actually you will find numerous of other applications. So you can think of, for example, uh, stock market, for example. तो आपके पास possible states हो सकती हैं कि up, down and stable, for example. तो ये तीन states हो सकती हैं. Maybe you're tracking a stock for a particular company. तो आपने देखना है कि आज उसका अप है तो कल अप ही होगा या डाउन होगा या स्टेबल होगा। ठीक है। एंड वेदर की आप बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। Of course, these are kind of very simple applications. You will have applications that come from different domains as well. So these applications everyone can understand, of course. तो वेदर में फॉर एग्जांपल लेट्स से रेनी एक स्टेट हो सकती है, एक क्लाउडी स्टेट हो सकती है, एक सनी स्टेट हो सकती है। So if it is sunny, what is the probability that it's going to be rainy tomorrow? If it is rainy today, what is the probability that it's going to be sunny or cloudy tomorrow, and so on. So these are states that will change with time indexes. आज ये स्टेट है, कल कौन सी स्टेट होगी, परसों कौन सी स्टेट होगी, and so on. And so on. So you can have other applications. For example, you may have a kind of situation where you have a restaurant, जैसे पीडीसी फॉर एग्जांपल। पीडीसी में पांच छह खाने होते हैं लेट्स से। तो आज लेट्स से उसमें जो स्टेट्स होंगी, लेट्स से बिरयानी बनी है, तो कल फॉर एग्जांपल कोरमा बनेगा, और फिर लेट्स से दाल बनेगी। सो दीज मे बी वेरियस स्टेट्स ऑफ फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट। आज लेट्स से बिरयानी बनी तो कल प्रोबेबिलिटी दाल बनने की क्या है या कोरमा बनने की क्या है। So these could be states. So you can find applications in almost every domain. So now let's move on to the hidden Markov model. So far we have considered a sequence of events, a single sequence of events. In the case of language model, it was sequence of words. In the case of web graph or page rank, it was sequence of web pages that a surfer would visit. ठीक है? In a hidden Markov model, there are actually two sequences. ठीक है। एक ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस है और एक लेटेंट सीक्वेंस है। ठीक है। और एक हिडन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एंड बोथ सीक्वेंसेस आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है। सो लेट मी गिव ए कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड देन वी विल गो इनटू द नोटेशंस एंड मैथ ऑफ इट। उसकी मेरे पास स्लाइड्स भी हैं, बट आई कैन आल्सो राइट हियर एज वेल, सो वी विल गो ओवर देम, एंड बिट ऑफ नोटेशंस उसमें होंगी, and I hope you can follow because I have a slide as well as इसका मैं notes और जो टेक्स्ट बुक का मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो अब एक एग्जांपल लैंग्वेज और एनएलपी से आती है विच इज कॉल्ड पीओएस टैगिंग। ठीक है। सो इसमें the problem is that given a sequence of words, we want to find the corresponding sequence of tags. And what are those tags? The part of speech for each of those words. ठीक है। सो लेट्स से सीक्वेंस ऑफ मेरे पास वर्ड्स ये हैं, आई स्टडी एट लम्स फॉर एग्जांपल। ठीक है। सो दिस इज वन सीक्वेंस, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज द ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस। ठीक है। एंड द हिडन और लेटेंट सीक्वेंस में अब मैं हर एक वर्ड का मैं पीओएस टैग डिटरमिन करना चाह रहा हूँ, और वो एक टैग स्पेस मेरे पास कोई होगी, उसमें से मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से जो पहला मेरे पास आई है, दिस इज ए प्रोनाउन लेट्स से। ठीक है। आई स्टडी द वर्ब फॉर एग्जांपल, एट इज a preposition, preposition p कर देते हैं, एंड लम्स इज ए नाउन। ठीक है।
So this is the second sequence of events, and this sequence of events is the sequence of states, and we say that this sequence of state is generally hidden. Okay? We have observed the sequence of words, and we want to find the sequence of states, which in this case is the sequence of tags or POS tags. Okay? सो इसी तरह एनएलपी में एक और एप्लीकेशन आती है विच इज कॉल्ड द नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन प्रॉब्लम. सिमिलर प्रॉब्लम है. ठीक है. तो उसमें अगेन वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स विच इज ऑब्जर्व्ड, एंड विद इन देन we want to label those sequence such that we want to identify specific named entities in them. So for example, again, I study at Lahore University of Management Sciences. ठीक है. अब हमारे यहाँ टैग्स वी वांट टू आइडेंटिफाई कि इसमें कंपनी के नाम या यूनिवर्सिटी के नाम्स कहाँ आ रहे हैं. तो मेरे पास यूजली इस तरह की टैगिंग प्रॉब्लम में तीन टैग्स होते हैं विच वी यूजली कॉल BIO. I means other, B is the beginning of a named entity, I is the inside of a named entity. तो ये मेरे पास क्या पे टैग्स बन जाएंगे if you do it correctly. I would be other, study would be other, uh, at would be other, Lahore आपका beginning of a named entity, in this case the name of the university, and Lahore University inside of inside, management inside and I inside. ठीक है. तो ये टैगिंग होगी इसकी. तो यहाँ हमारे पास टैग स्पेस या स्टेट स्पेस जो है तीन पॉसिबल स्टेट्स हैं BINO. प्रीवियस केस में पीओएस टैगिंग में आपके पास जो टैग स्पेस या स्टेट स्पेस है वो depends on the number of POS tags that you have. Usually, if you want to keep to a minimum, so चार पांच होते हैं, but ये ज़्यादा भी हो सकते हैं. So you have to specify or define those tag space. Okay, so the named entity recognition problem is another problem which is modeled by two sequences. The observed sequence is a sequence of words, and the hidden or latent sequence that we want to find is a sequence of tags for those words such that we want to find the words in that sequence that represent names of companies, names of persons, names of uh, people, and so on. In this particular case, we want to find the name of a university. So the tag for usually the tags are BIO. B basically stands for the beginning of a named entity, I for a inside of a named entity, and O is other, not a named entity. So I've given an example here. I study at Lahore University of Management Sciences. I study at would all be O. It's not part of a named entity. While the named entity starts at Lahore, so that is a B, and then University of Management Sciences, all of them are I because they are still part of a named entity. So this labeling would tell us whether which part of a sequence is a named entity. So you can apply it for others as well. So names of companies, names of persons. So 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 of course you will have to define it for each specific case. That's why this is called named entity. आपको नेम करना है क्या एंटिटी ढूंढना चाह रहे हैं. कंपनी का नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम है, पर्सन का नेम है, लोकेशन है, वट एवर, डेट एंड टाइम वो भी हो सकता है. ठीक है. So what from these two applications you see that there are two sequences. One sequence is O, okay? So this is a sequence O1, O2, dash 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 to OT. So this is the observed sequence. And then you have the other sequence Q. This is Q1, Q2, QT.
and this is the latent sequence. ठीक है? So this is the problem setting. अब इस problem setting में कई different tasks हो सकते हैं that you can solve. So we will discuss those. Maybe I can open the slides now and we can follow it from there. So the HMM part, I have these slides that I've made, and I will also share the chapter from the book that would cover HMM. For page rank, I will share the slides that I showed earlier. And also for HMM and Markov chains, I also have a more chapter from another textbook, but that would be kind of supplementary reading for those who want to go deeper. वो भी मैं share कर दूंगा. So you will have now sufficient resources to study these concepts. जो ओरिजिनल चीज़ें हमने पढ़ी थी डॉक्यूमेंट मॉडल्स और लैंग्वेज मॉडल्स आई थिंक फॉर दोज जो मेरे नोट्स थे वही काफ़ी होंगे उसके लिए टेक्स्ट दूंगा तो वो उसमें एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी जो मेरे ख्याल से आपके लिए इस कोर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है तो आई डोंट थिंक आई विल बी गिविंग यू टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट चैप्टर्स फॉर दोज ऑलराइट ये खुल गया so we have already looked at the problem setting but just very quickly so we have a sequence of events O which is O1, O2 to OT, and we have a sequence of states Q, Q1, Q2 to QT. Each of these Q1 comes from a possible state capital S. ठीक है? So capital S में S1, S2 to Sn. So there are n possible states, capital N possible states. Similarly, for each of those observed events, O1, O2, OT, that comes from a vocabulary. So I'm kind of using the terminology of hidden Markov models, but with a slight एप्लीकेशन फोकस टू एनएलपी जो मैंने दो एप्लीकेशंस बताई हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या पीओएस टैगिंग तो यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे ओ का जो स्पेस है वो हम वोकेबलरी ले रहे हैं सो दोज आर वर्ड्स सो V1 V2 V3 दोज आर वर्ड्स और टोकन्स इन द वोकेबलरी ठीक है बट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ये वी और एस आपके अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकते हैं So usually in hidden Markov model, we also have some two additional states, S naught and SF. So these are the starting states and the final states. So remember states का जो relation वो Q के साथ है ठीक है while जो events हैं जो observed हैं उसका relation V के साथ है and if you relate it to the example V is the set of words or S is the set of tokens or tags sorry S is the set of tags टैग्स पीओएस टैग्स हो सकते हैं या नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन बीआईओ टैग्स हो सकते हैं ठीक है so the general probabilistic model is that you have a probability distribution over the two sequences O and Q P O and Q ठीक है so if you know this probability distribution then obviously you can solve many questions so the joint probability distribution P of O and Q
So if you know this probability distribution, then you can sample from this distribution and generate sequences that will look like the sequences from a data set from which this distribution is learned. Or you can generate a data set for this distribution. Okay, if you know this distribution, then you can solve various problems. So let's discuss those. The next slide. So there are three problems that arises in this setting where you have two sequences O and Q. And if you know this probability distribution, there are three problems and three corresponding applications. The first problem is called a likelihood problem. So this is a likelihood problem means that you want to find the probability of O. So what is O in our application? It's a sequence of words. But we know the distribution of O and Q. इसका मतलब है कि Q को आपने sum out करना है to find the probability of O. ठीक है? So an example for this is, let's say, which sequence O is more likely, meaning that we want to find the probability of O either as study at LUMS or study I at LUMS or study some other combination. So obviously from our knowledge of language, the probability of first sequence would be larger. Okay? But let's say if you have a model P, O, and Q, how would you find this probability? You will have to find it by summing out all the states. ठीक है? States की possibility सारी sum out कर देंगे so that you are left with just O. ठीक है? So this is called a likelihood problem. The second problem is called a decoding problem. So this is the decoding problem, or you can also think of this as a sequence labeling problem. The problem now is that you are now given O, मतलब आपके पास sequence of words given है. Now you want to find the best cue for this, meaning that for each of those words आपने label करना है. ठीक है? So this is the POS tagging problem, the NER uh, problem, and so on. Again, from a probabilistic perspective, if you know probability of O and Q, how can you do this? So you will have to find all combinations of Qs और उसमें से जिस combination of Q का probability OQ सबसे ज़्यादा है, we want to return that Q. In other words, argmax आप कर रहे हैं of POQ. ठीक है? So this is called the decoding problem और इसकी आगे जाके हम जब देखेंगे जो एल्गोरिथम बनेगा ये विटरबी एल्गोरिथम होगा. ठीक है? So given a sentence, we want to find the POS tags for that. And the third problem is problem 3, and this is sometimes divided into two sub-problems, 3A and 3B. So this is the learning problem. So now we are given data, meaning that you have large amount of data where you have O, meaning that you have a running text. उस running text का दो scenarios हैं, सारों का Q भी दिए हुए हैं या सिर्फ Q का set of states दिए हुए हैं. In the first case where you all also given all Qs, तो ये आपकी supervised learning problem बनेगी. In the second case where Q का सिर्फ ये पता tags पता है सिर्फ आपके पास, so this would be a semi-supervised learning problem or in general you can call it an unsupervised learning problem.
ठीक है. So now we have defined these problems. So now let's formulate this in a bit more detail, and then we look at the algorithms. Excellent. Okay. So, so let's say likelihood problem क्या थी? We want to find the probability of O. ठीक है? So you can do this by summing out all Q from probability of O and Q, right? And you can rewrite this as using product rule, probability of O given Q and probability of Q. ठीक है? So this is the likelihood problem. So similarly for the decoding problem, वो यही फॉर्मूला होगा. लिख लेता मैं यहाँ. ठीक है. So the final Q, that's a Q star, is basically arg max of for all possible Qs of P O given Q and P Q. ठीक है. So this is a decoding problem or sequence labeling problem. So these are the two problems that we focus on. Learning problem इन्हीं से आगे easily बन जाती है. So we'll discuss that very briefly at the end. Okay. अब so far this is pure probability theory. अभी hidden Markov model नहीं बना. Markov model, remember Markovian assumption was an assumption based on uh, the context. अभी तक हमने कोई assumption नहीं किया. We have written the whole sequences as probabilities. ठीक है. So तो हमारे पास probability of Q है. So let's say इसको हमने निकालने के लिए हमको कितने और in other words कितने probability values इसमें होंगे. So remember this is a sequence of length t. And each, let's say हमारा पास जो हमने notation define की थी, each of these Qs is coming from a state. और states मेरे पास कितनी थी? n थी states. ठीक है. और इसकी length कितनी है मेरे पास? मेरे पास t lengths हैं. तो बेसिकली इतनी मेरे पास different probabilities मुझे इसके अंदर चाहिए. n raised to power of t. ठीक है. सिमिलरली मैं दूसरे को देखूं o given q. तो फॉर सो कितने पॉसिबल क्यूज हैं? वो बेसिकली वही n रेज टू पावर ऑफ t है. फॉर ऑल ऑफ दोज n रेज टू पावर ऑफ t यू नीड टू फाइंड o कितने थे मेरे पास. o क्या था? वर्ड था. वर्ड कम्स फ्रॉम वोकेबलरी v. उसकी लेंथ भी t है. सो एसेंशियली दिस वुड देन बी n रेज टू पावर ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय v रेज टू पावर ऑफ t. ठीक है. सो इन जनरल t would be very large depending on the application, but in the terms of natural language, T is usually very large, 30, 40, 100,000, whatever. And also V is very large. V vocabulary size is usually very large. So ये numbers massive होंगे. So we need simplification assumptions. तो दो assumptions लेते हैं. एक तो Markovian assumption है. उसमें assumption क्या है? So हम basically remember probability of Q. This is equal to probability of Q1, Q2, QT. ठीक है ना. इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगेन दिस इज अ सीक्वेंस. ठीक है ना. QT गिवन Q1
Q2 dash dash probability of Q T minus 1 Q1 Q2 dash dash and so on. तो Markovian assumption ये होगी कि we will restrict the context to just one state, meaning that the present state defines the next state or the next state depends on only the preceding state. तो वो हम करेंगे तो this would simplify to probability of Q T Q T minus 1. So ये T or T minus 1 ये subscript है. I hope you can understand. I'm not writing the underscore. ठीक है? And then of course it will continue in that fashion. So you can write this in this sense. The product, ठीक है? ये products हैं आपके पास, of course. हाँ ठीक है. Product for all possible T's, ठीक है? Of probability of Q T Q T minus 1. ठीक है? So ये एक assumption है which will simplify your computation. The second assumption works on the other component, and that is the conditional independence assumption. ठीक है? So other probability हमारे पास क्या थी? Probability of O given Q. This is probability of O1 OT Q1 QT. So we will simplify this to saying that each of those O's is independent of all the Q's except the current Q at the current time index. In other words, we will simplify it to simply the product for T. So this would be probability of OT given QT. ठीक है? So if you make these two assumptions for this two set of sequences O and Q, where Q is hidden and O is observed, we actually get the hidden Markov model. So this model in which we make these two assumptions is called the hidden Markov model. Okay, जो previous मैंने लिखा था probabilities, अच्छा. So I was trying to tell you कि probability of Q निकालने के लिए कितनी probability terms चाहिए. Remember Q is probability of Q1 QT. Joint probability है, a sequence की probability है. Each of those Q's की कितनी possible values हैं? N possible values हैं. ठीक है? And total sequence length कितनी है? T है. N raised to power T possible probabilities निकालनी पड़ेंगी. Of course, one would be dependent, N raised to power T minus 1. So that's what I was mentioning here. Is that clear? So N raised to power T probabilities. But if you make the simplifying assumption, जो हमने ऊपर की है, then this actually reduces to QT to QT minus 1. So here you actually only need N square probabilities. So this is the simplification. N raised to power of T के बजाय N square हो गया. T is kind of a parameter of the model and can be very large. Now you have just a constant T, 2 above it. So ये by the way,
ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो आपने पहले भी देखी थी मार्कव चेन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रीवियस स्टेट. So for this you need n square possible probabilities. N is the total number of states. So remember ये जो variable है ना q1, वन जो हम लिखते हैं, this is the position. This variable can take on a value from any possible state. और state मैंने कहा था कि there s1 to sn है. qt in general. So n possible states हैं. Q can take on any value from s1 to sn. So n possible values हैं. और ये पीएस टैगिंग में फॉर एग्जांपल ये आपके पास 7 होंगे, 6 होंगे, जो भी टैग्स हैं आपके, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, डिटर्मिनर एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? अच्छा, तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स. लुक्स लाइक ये टाइम हमारा थोड़ा हो रहा है, प्रॉब्ली हम सारी ख़त्म नहीं कर पाएंगे. 45 तक है ना टाइम. So this slide discusses the Markovian assumption that I've already talked about. So we assume that the next state depends on only on the previous state. So qt depends only on qt minus 1. Okay? So instead of taking the entire sequence, context is the complete sequence of t events. We now just look at the previous event. So this is the second assumption, conditional independence assumption. This applies on the second component of the probability of O given Q. So we assume that each event O depends only on the current state Q. ठीक है? सो जो और अदर कंपोनेंट्स थे प्रोबेबिलिटी में वो हमने ड्रॉप कर दिए, उनकी डिपेंडेंस खत्म कर दिए. कंडीशनल इंडिपेंडेंस. So if you make both of these two assumptions, we get the hidden Markov model. Okay, so the hidden Markov model arises when you you make these two assumptions on the two sequences O and Q. And this is completely defined by these two matrices A and B. The matrix A is the transition matrix, and probability B or matrix B is the emission probability matrix. So we will discuss this in the next slide. So a HMM, as I said, is completely defined by lambda, and lambda consists of two matrices A and B. So the capital A matrix is the state transition probability matrix. This is a matrix for the variables Q. Remember, Q can take on states from S1 to Sn. Okay? And this matrix is of size n by n. But if you also include this initial state S0 and Sf, then of course this will be n plus 2 plus n times n plus 2.
वन एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, सो ए आई जे basically is the probability of transitioning from state Si to Sj. So conditional probability of Si, so Sj given Si. This is same as we saw before for page rank and for Markov chain. ठीक है, so small a से एक element हम denote कर रहे हैं. ठीक है, so obviously since again let's for the as we saw for page rank, तो एक row of this matrix should sum to one, so which is the probability of state Si given state Sj. So SI पे आने के लिए from all possible SJs की probabilities 1 होनी चाहिए. So the other matrix capital B is the emission probability matrix and its size is, so its size is basically V, the vocabulary size multiplied by N. मतलब rows आपके पास number of words हैं, columns आपके पास number of states हैं या tags हैं, ठीक है, and each element of this is defined as follows. अब इसकी तो स्पेसिफिक मैंने एक नोटेशन यूज की हुई बिकॉज दिस इज व्हाट इज आल्सो फॉलोड इन द बुक. सो बी सबस्क्रिप्ट जे एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आई, ठीक है. Remember, whenever we use I and J, they will always refer to states. States are values assigned to the variables Q. Okay? And whenever I use the index T, that would usually refer to the time sequence and they will usually refer to the variable O. So Bji basically is the uh, probability of seeing vocabulary word I given state J. So for any possible state, the sum for all the words should be equal to 1. So again, this is from probability theory. So the emission for a word given a state should all sum to 1. तो इसमें for example आपको दिखाते हैं, ठीक है. So let's say ये pure tagging की मैं बात करता हूँ. So let's say मेरे पास state n है. Probability of let's say word let's say I given noun, ठीक है. A word I given noun क्या होगा, तो ये बता रहा है. So this would be usually I is not a noun, so this should be a very small number. But on the other hand, probability of let's say uh, my name Asim given noun, this should be high because Asim is a noun. So this should be 0.95, for example. So these are the probabilities that is represented by the matrix B. So emission probabilities, ठीक है, and they are captured in this matrix. The matrix का size क्या है, V into N. N states हैं आपके पास वो जो given में आ रही हैं और आपके पास total words जो हैं वो V में है. And of course summing for all the V's for a given state should be 1. So ये सारी conditions वहाँ define हुई. ठीक है. So
again, a complete HMM is specified by the parameter lambda, which consists of two matrices A and B, and these two matrices contain probabilities. A is the transition probability matrix, and B is the emission probability matrix. So once you have this, you have completely defined the HMM, and then you can go back and solve those three problems: likelihood, decoding, and learning. तो हम अब वो देखेंगे next. So the likelihood problem was we are summing out all the Q's and we are left with the O. But now, of course, our model is simplified. So we will be only dealing with the state transition probabilities and the emission probabilities, and we will be summing out the relevant elements to get O. And similarly for decoding is the same, only that you do the max. ऊपर sum कर रहे थे, यहाँ you are taking the argmax. Computation और जो components हैं probability के वो वही है. So if you try to solve these problems again by using a naive approach, meaning that you do all the summations or you do find the maximum from all the possible combinations, it will still be computationally expensive. But fortunately, both of these problems have a well-defined structure, and that structure comes from the time index t. So if you have solved a problem for a smaller time index, let's say starting from time 0 and time 1 and time 2, let's say you have solved it for time 2, you can solve it for time 3 by just looking at the solution for time 2. So if you recall, ये जो setting है ये आपकी dynamic programming की setting है. You can solve complex problems by looking at the solutions for simpler problems. So you can make this problem solution efficient for both likelihood and decoding by using dynamic programming. ठीक है? So we compute the solution for sequences of length t from solutions that we have already computed and saved for sequences t minus 1. So that's the idea. And when you apply dynamic algorithm, the problem 1, which was the likelihood problem, uska jo algorithm banta hai, we call it the forward algorithm. Or the problem 2 थी, which was a decoding problem, uska algorithm using dynamic programming is called the Viterbi algorithm. Both of these algorithms are almost very same. So we will actually discuss the Viterbi algorithm. Uh, the forward algorithm is simply एक जगह summation use हो रही है, Viterbi में वहाँ max use हो रहा है. And both of them are based on dynamic programming. Forward algorithm solves the likelihood problem. Viterbi solves the decoding problem. Or decoding problem, by the way, was the sequence labeling problem. So this is the algorithm here, and I think 5-6 मिनट रह गए हैं, कर लें complete. Although this is the main part, uh, I probably need 10 minutes for this. Okay, so this is the algorithm that's mentioned here. So essentially, you have an initial, so you compute. So basically, you create a data structure called VT, a matrix VT. Capital V, capital T is a matrix. ठीक है, उस matrix में आप
सब प्रॉब्लम्स के आंसर्स लिखने शुरू कर देते हैं। ठीक है। एंड पहला जो कॉलम है उस मैट्रिक्स का, आप वो आप एक दफा कर लेंगे, एंड देन यू डू ए रिकर्शन फॉर द रिमेनिंग कॉलम्स until you reach the final state. And then once you have reached the final state, you can trace back based on जो भी आपका maximum आ रहा है to get the decoding or the labeling for the problem. So this is a big picture. So let's look at the in the recursion part. Let me actually go to the next slide. So this is the algorithm. So we create this matrix V capital T, V and T. So the for vector B. ठीक है। and इसका साइज क्या है, n बाई टी। टी आपका सीक्वेंस लेंथ है, n आपके पॉसिबल स्टेट्स है। सो सो कॉलम्स टी हैं। सो उसका पहला कॉलम है, दिस इज फॉर लेंथ वन। सेकंड कॉलम फॉर लेंथ टू। अब पहला कॉलम फॉर लेंथ वन है और इस पे n स्टेट्स हैं। इसका मतलब है कि फॉर ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ ए स्टेट हमने उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। सो सिमिलरली अब जब कॉलम वन से कॉलम टू पे जा रहे हैं तो वी जस्ट लुक एट नीड टू लुक एट द best from this column rather than best from the entire previous space. So this is the optimization that comes in here through dynamic programming. Okay. So we fill out the first column starting from the initial state as naught, and then we apply the recursion, which is given as one equation until we reach the final state. And whenever we are filling out a cell value, लेट्स से ये वाला सेल वैल्यू सेकंड कॉलम में फर्स्ट सेल वैल्यू से भरा है, तो वी हैव ए बैक पॉइंटर। रिमेंबर फर्स्ट सेल वैल्यू वीटी का इज टेलिंग अस दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेट या लेबल, और ये वाला लेट्स से सेवन था, तो सेवन लेबल यहाँ आ रहा है। एंड देन वंस यू हैव रीच्ड द फाइनल स्टेट से आप पूरा ट्रेस कर सकते हैं स्टेट्स। सो फाइनल स्टेट तो खैर गिवन है, तो ये ट्रेस करके इधर आएगा। इसका मतलब है कि जो लास्ट पोजीशन थी उसका स्टेट ये है, उसकी पिछली पोजीशन की स्टेट ये है, उसकी पोजीशन ये है, until you come to the first position. तो ये आपके पास सारे लेबल्स आ जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली डिकोडिंग प्रॉब्लम। ठीक है। सो लेट्स लुक एट दीज इक्वेशंस, जो रिकर्शन इक्वेशन है, एंड लेट मी शो हाउ इट वर्क्स। मैं लिख लेता हूँ बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके। So we said that we have this matrix VT, which stores, and of this matrix is of size n by t. ठीक है। So at the start, you basically fill out the first column. Well, let me write the recursion first. So recursion में हमने, we want to fill out the cell for the tth value. So VT is a cell value, subscript t at time t, ठीक है, and for some state j. मतलब VT matrix का jth रो और tth column, ठीक है. This is basically then given by the max for I, and I mentioned what I is, of the, of course, we start with t vt, t minus 1 I into a ij into b j t. So this is the recursion formula. आपने जो पिछले कॉलम में जो ith स्टेट की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो ली और वो देखा कि आपने उसको आगे मूव करेंगे तो उसकी क्या परफॉर्मेंस आएगी। आगे मूव करने का मतलब ये है कि उसका जो ए और बी, मेंबर ये ए क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट जे गिवन स्टेट आई। ठीक है। ए आई जे, पिछला स्टेट आई था, अगला जे है। एंड देन वो दूसरा बी क्या था, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ टी गिवन स्टेट एस जे।
तो वो सारे हमने मल्टीप्लाई करके दिस विल गिव अस द सेल वैल्यू फॉर द नेक्स्ट कॉलम ऑफ वी टी. सो वी कंटिन्यू फिलिंग दिस. बाय द वे ये मैक्स निकालना है फॉर ऑल आईज. प्रीवियस कॉलम में से किस आई के साथ मैक्सिमम आ रहा है वो हमने लिख देना, वो बैक पॉइंटर लगा देना. So we will continue in this fashion until we reach the final state. So that's essentially it for the Viterbi algorithm. So if I write this in terms of जो आपके पास A I J into B J into T, तो ये basically क्या है? This is probability of S J given S I, ठीक है, multiplied by probability of O T given S J. By the way, O T is the observed event at time t, and it could be any of those words from vocabularies v1 v2 v3. हम वो explicitly यहाँ लिख नहीं रहे, ठीक है. हमको पता है, वो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, वी ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, तो वो इन ए वे हमारे उसमें आइट्रेशन में नहीं आ रहा. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. और हम पे जो पिछले का जो बेस्ट था वो हमने उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, वी टी टी माइनस वन इंटू आई. And then of course we find the one that has the maximum of this. So max for all I. ठीक है. So any questions? Okay, so एक तो I will share the slides. ठीक है. स्लाइड्स मेरे पास ये सीक्वेंस लेबलिंग की स्लाइड्स भी हैं, पेज रैंक की स्लाइड्स भी हैं. एंड ऑल्सो आई विल शेयर ए बुक चैप्टर ऑन HMM on which these slides are based. ठीक है. ऑल्दो थोड़ी सी नोटेशन, थोड़ी सी, आई वुड से द स्लाइड्स की थोड़ी सी बेहतर है. बुक में थोड़ी सी कंफ्यूजन थोड़ी सी ज़्यादा, बट माई एग्जाम्पल एंड इन द स्लाइड्स इज द सेम एज इन द बुक. ठीक है. सो HMM का बुक चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा. सो एज अ सेड, पेज रैंक का स्लाइड भी अपलोड हो जाएगा. एंड आई हैव अनदर book chapter that is more general on Markov chain and HMM. That is a book chapter by a book by Agarwal. This is a new book actually, 2025, Probability and Statistics for Machine Learning. इसका chapter 10 है. So this would be for supplementary reading. I would not force you to read this uh, as part of your course. ठीक है. सप्लीमेंट्री रीडिंग इसमें बहुत मार्कअप चेन भी है, HMM भी है, पेज रैंक भी है, अदर एप्लीकेशंस भी हैं. बट इसमें थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड फ्रॉम ए मोर मैथमेटिकल रिगरस वे, तो वो ये देख सकते हैं. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर एक अनरिलेटेड क्वेश्चन, बट जो फीडबैक हमने सबमिट करना था, मिड सेमेस्टर फीडबैक, वो गलती से मिस हो गया है और उसकी डेडलाइन संडे थी. तो लाइक इज देयर अ पेनल्टी फॉर इट, या फिर मतलब आप कर सकते हैं किसी तरह? जो फीडबैक है वो एक्चुअली हम कंट्रोल कर ही नहीं रहे, वो RO कंट्रोल कर रहे हैं. मुझे भी इसके ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है. uh, तो मे बी यू कैन सेंड एन ईमेल टू RO. अभी जो आप लिंक खोलते हैं वो बंद हो गया. यस सर, वहाँ पे मतलब कोर्सेज शो हो रहे हैं, बट जब फॉर्म खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि डेडलाइन पास्ट. अच्छा ठीक है. तो वो आई डोंट हैव ए कंट्रोल ओवर दैट, तो आपको वो RO से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो खोलें. ओके सर, ठीक है. ठीक है. थैंक यू. वो मेरे पास नहीं. और मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक हमको फीडबैक कलेक्ट करके भेजी भी नहीं है. सो वी डोंट हैव द फीडबैक येट. ओके सर, गॉट इट. एनीथिंग एल्स? अच्छा, hopefully Dr. Awais will be back for next lecture. I'm not too sure, but that was the plan originally. इंशाल्लाह वो थर्सडे का लेक्चर वो लेंगे.
तो ये मटेरियल जो मैंने बताया है क्विज, ये इस कंटेंट का जो मैंने कवर किया है वो कुछ तो मैंने अपलोड कर दिया है, वो कुछ आज मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और सर ये लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? फिर से बोलें। सर ये लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? लेक्चर वीडियो तो आई थिंक इन 2 आवर्स हो जाएगा। जो कंटेंट है वो मैं टीए को, अब्दुल बासिर को भेज दूंगा, वो भी अपलोड कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।